Life is a collection of changes, so take every change as a challenge. Some will give you success and some will act as a stepping stone to success. A very good morning to my dear children. A warm welcome to all of you to a new academic session 2020-21. And let's start the session with a smile and make this session a remarkable one. For that, let's work not only for the achievement of success in academic, but also for making the society a wonderful place to live. To take the blessings of your parents and elders and just have a confidence in yourself that you are the best. So, my dear children, utilize your time in enhancing your reading and writing skills and at the same time involve your family in constructive activities. My best wishes to all of you. A very good morning to my dear children and warm welcome to our new academic session 2020-21. Here our new journey starting. In this journey, we are learning about science. In science, our first lesson is reproduction in plants. Plants play a very important role in our life. Life on the earth cannot exist without plants. We all know that plants are how much important in our life. When we are asking the question about plants, what the plants are giving or what we will get from plants, then all of you will give the answer. We are getting fruits, vegetables, medicine, wood, oxygen, etc. etc. It's correct. Plants supplying or giving us all these things which we need. At the same time, the plants make our earth a beautiful place. So, did you think how these plants are increasing in their numbers? Wherever you go, you can see the plants. Many plants are there. How their number are increasing? So this is because of they are producing their own plants. That is a continuous process and it is known as reproduction. So here we are learning what is reproduction. Reproduction is a process by which new plants are grown from the parent plant. For example, mango, apple, orange, etc. You know that mango have one seed. Orange, apple have many seeds. In mango plant, if you take the seed and sow in the soil, it will start germinating and produce a new plant. In that plant, it produces many mango. And all these mango have seeds. And from the seeds, again they are producing many plants. In that way, their numbers are increasing. This process, continuous process. That's why plants are again and again growing in our earth. Since plants play a major role in our lives, it is necessary for us to grow new plants. We can grow new plants from different parts of a plant, like spores, seeds, or by vegetative parts. We know that plants produce fruits and in the fruit seeds are there. From the seeds, new plants are growing. But all plants are not producing seeds. In that case, they have some other parts are there which grow into new plants. That all we will learn in this lesson. In this slide, we are going to learn about spores. That means reproduction from spores. Spores are very tiny seed-like structure. Example, ferns, mushrooms and mold reproduce from spores. The first picture you can see the ferns plant, and in the second picture you can see that the downside of the leaf there are brown color spores are there. So these spores, when they are mature, they fall from the leaves and start germinating.
And the next slide you can see the mushrooms. And in mushrooms you can see the umbrella-like structure. In that structure, small layers are there. In these layers, small spores are growing. So these spores germinate and produce new mushrooms. This slide we are going to learn about reproduction from stem. Stem means underground stems. Like onion, ginger and potato, they are growing under the ground, but they are not roots. They are known as underground stems. Ginger and potato grows from buds. Small buds are there that will grow into new plants. In potato you can see small eyes are there. In these eyes, these buds will germinate and that germinate and produce new plants. And in onion it is bulb shaped structure is there, and if you put the onion in water or in soil, it will start germinating and produce new plants. This slide we are learning reproduction from stem cuttings. We can reproduce some plants by taking a cutting from the stem and planting it in the soil. After few days, this cutting will grow into a new plant. Example, rose, hibiscus, sugarcane, etc. How the rose is growing, that video is given. You can watch it. The same time, reproduction from runner. In case of strawberry, all of you like strawberry very much. So long stems along with buds grow over the soil surface and are called runners. Buds which are present on the stem grow into new plants. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गुलाब को कटिंग से किस तरह से उगाना है वो सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कटिंग्स जो हैं ये मैंने माली से मंगवाई थी और ये तीनों कटिंग्स जो हैं मेरे हाथ से थोड़ी सी बड़ी हैं। इतनी ही कटिंग्स आपने भी लेनी है, इतनी बड़ी कटिंग्स लगाएंगे तो अच्छे से उगती हैं कटिंग्स। और इस कटिंग को जो है हम पुरानी मिट्टी में उगाएंगे। नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है उसके अंदर लिया है। अगर आप अपने आप से मिट्टी बनाते हैं, पुराने गमले की मिट्टी आपके पास नहीं है, तो आप जो मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर एडिशनल कंपोस्ट वगैरह कोई भी मत डालिए। गोबर की खाद, पत्ती की खाद, कोई खाद आप इसमें मत डालिए कटिंग लगाते हुए, वरना कटिंग के सड़ने के चांसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से काटा हुआ कटिंग को थोड़ा सा एंगल देके काटा हुआ है कटिंग्स को, और इन कटिंग्स को हम लगाना सीखेंगे आज। दोस्तों, गुलाब की कटिंग्स जो है वो सर्दियों के टाइम में अच्छी लगती है। आप इसे अक्टूबर से लेकर के फरवरी के टाइम में लगाएंगे तो अच्छे से ग्रोथ करती है। गर्मियों के टाइम पे गुलाब की कटिंग नहीं लगाई जाती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में चांसेस उसके उगने के कम हैं। तो आप हमेशा इसे अक्टूबर से लेकर जनवरी या फरवरी तक लगा सकते हैं। आप अभी भी इसे मार्च के फर्स्ट वीक तक भी लगा सकते हैं चाहें तो, लेकिन आप इसे बिल्कुल जो है छाया में रखिए, वरना कटिंग आपकी सूखने लग जाएगी। बाकी अगर आप ठंडे इलाकों से हैं तो ठंडे इलाके वाले लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो पूरे साल जो है गुलाब को लगा सकते हैं, गुलाब की कटिंग्स। और यहाँ मिट्टी को मैंने गीला कर लिया, पानी दे दिया मिट्टी को। मिट्टी हमेशा इसकी जो है वेट ही रहेगी, सूखने नहीं देना आपने मिट्टी को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है रूटिंग हार्मोन लिया है। रूटिंग हार्मोन जो है हर एक नर्सरी पे अवेलेबल होता है। रूटिंग हार्मोन ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपने भी रूटिंग हार्मोन लेना है। बिना रूटिंग हार्मोन के भी कटिंग्स लग जाती हैं, लेकिन अगर आप लेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रूटिंग हार्मोन में हमने डिप करके कटिंग्स को जो आप देख रहे हैं किस तरह से स्पेस करके लगा दिया है। हमेशा जब भी कोई भी कटिंग आप लगाएं, हमेशा जो है ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, 3 से 4 कटिंग एक गमले में लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएं। तो इस तरह से आप कटिंग्स को लगाएंगे, तीनों कटिंग्स को लगा देंगे। आप रूटिंग हार्मोन नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, मैं ले रहा हूँ। रूटिंग हार्मोन हर नर्सरी पे अवेलेबल है, वरना आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और इस तरह से हम तीनों कटिंग्स लगा देंगे।
दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको गुलाब को कटिंग से ग्रो करना दिखाया और आप देख सकते हैं 3 कटिंग्स मैंने लगाई थी, तीनों ही कटिंग्स में पत्ते आ गए हैं और इन कटिंग्स को जो है मैंने बिल्कुल छाया में रखा हुआ है। Another method is layering. In jasmine plant, the lower branch of the stem is bent so that a part of the stem is buried under the soil. The growing tip remains above the soil surface. Roots grow from the part of the stem buried in the soil. Now this new plant can be cut from the parent plant and planted as a new independent plant. And this process is known as layering. Reproduction from leaves. Some plants have leaves which grow buds along its edges. New plants grow from these buds and later separate from the parent plant. Example, bryophyllum and begonia. Bryophyllum picture is given and begonia is there with flowers. So in bryophyllum you can see that many small plants are growing on the side of the leaves. So each plant we can separate and grow into a new plant. Reproduction from leaves. Next is reproduction from roots. Roots of some plants such as sweet potato, carrot, radish, etc. not only store food in them but also produce new plants. They are known as tuberous roots and they store food in these roots. These roots are planted in soil. So this is an activity you can do in your home. Take that activity 1.3. You can do it in home and you can find out how the changes are taking place.